Today we are going to discuss human anatomy and physiology, D Pharm first year. The chapter is tissue, and the first part already we have discussed in our tissue part 1 video. Today we are going to discuss about connective tissue, muscular tissue and nervous tissue. That means the epithelial tissue we have already discussed. So here also we are using Odia language so that it is easy to understand. Syllabus we have discussed mainly epithelial, muscular, connective and nervous tissue in the syllabus, and question comes from the epithelial part. So there is also chances muscular, connective and nervous tissue. So we'll go through details about the muscular, connective and nervous tissue. So first, connective tissue. Connective tissue are the major supporting tissue of the body. It is composed of variety of cells, fibers and semi-solid matrix. So mainly it is composed of cell, fiber and semi-solid matrix. And fiber, that means non-living product of the cells mainly. So again, connective tissue are mainly for supporting the tissue of the body. So what are the different characteristics? Let us discuss. Connective tissue ranges from avascular to highly avascular. Means avascular means no blood vessel, and highly vascular means highly blood vessel or rich in blood vessels or high blood supply. So composition, composed mainly non-living extracellular matrix that separate the cell of the tissue. So location, it is present between the different tissue and organ. It can be found in and around the body organ. Skeletal tissue present in the form of bone and cartilage, and fluid connective tissue as blood and lymph are connective tissue. ताले ओवरऑल कौन कहला कनेक्टिव टिश्यू कहा को आमे कहबा ना कनेक्टिव टिश्यू मेजर सपोर्टिंग टिश्यू ऑफ द बॉडी. आम बॉडी रो गोटे मेजर सपोर्टिंग टिश्यू. अब केमिति तयारी हिताई कनेक्टिव टिश्यू ना सेल ता सहित फाइबर, दैट मीन्स नॉन लिविंग प्रोडक्ट ऑफ सेल. दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स, दैट मीन्स फाइबर आउ सेल आउ सेमी सॉलिड मैट्रिक्स बिटवीन द सेल. ताले मैट्रिक्स, फाइबर आउ सेल को लेकी कनेक्टिव टिश्यू तयारी हैला. तार मेजर सपोर्टिंग, एटा को मेजर सपोर्टिंग टिश्यू मध्य कुहा जाए. आउ देखिबा फंक्शन कौन. व्हाट आर द फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू? ना इट बाइंड वेरियस टिश्यू टुगेदर लाइक स्किन विथ द मसल, मसल विथ द बोन. ताले ये जो मसल और बोन भितरे जो कॉम्बिनेशन बस स्किन और मसल भितरे जो धरी रखन, सो होल्ड टुगेदर केमिति ना विथ द हेल्प ऑफ दिस कनेक्टिव टिश्यू. सो इट फॉर्म intercellular substance between the cells of different type of tissue so that it helps in the frictionless movement. So suppose bone आउ मसल भितरे फ्रिक्शन टा केमिति कमिबो ना ये ता भितरे हेल्प करिवो टू रिड्यूस द फ्रिक्शन और टू हेल्प द फ्रिक्शनलेस movement of the body. So it form sheath around the body organ and make a kind of packaging tissue. Suppose areolar connective tissue,
protect the body against wound and infection. जो wound infection हेले help करे, connective tissue helps to protect our body. Adipose tissue store fat and insulate, that means temperature regulate. It helps adipose tissue. So these are the connective tissue: areolar, adipose, supportive, hemopoietic, lymphatic. These are connective tissue which helps different parts of the different area of our body. Like areolar tissue protect from wound and infection. Adipose tissue store fat and insulate, that means maintain the body temperature or heat loss. It prevent the heat loss. Or supportive tissue form shape and frame of the body. Hemopoietic tissue produce blood. Lymphatic tissue helps body immunity. So these are the different connective tissue helps in different area of our body. So this is the function of connective tissue. ताले function कौन कहला ना एरियोलर टिश्यू बॉडी को प्रोटेक्ट करिवारे सहाय्य करे wound आउ इन्फेक्शन रु. एडिपोज टिश्यू बॉडी रो टेम्परेचर टाकू लॉस हेबा पई दिए नाही, टेम्परेचर रेगुलेट करिया पई सहाय्य करे. सपोर्टिव टिश्यू हमर बॉडी रो फ्रेम टाको, सो फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी. हेमोपोएटिक टिश्यू ब्लड तैयारी हेबा पई सहाय्य करे. लिम्फेटिक टिश्यू बॉडी रो इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करिया पई सहाय्य करे. सो दिस द फंक्शन ऑफ connective tissue. Now comes to the see the figure. Loose connective tissue under present in the under the skin or ligament. See the figure. Or cartilage, bone, blood. These are the different type of connective tissue present in our different area in our body. So now classification. Classification कौन ना connective tissue proper or supporting connective tissue or fluid connective tissue. कौन कहला connective tissue first there are three different type: connective tissue proper or supporting connective tissue or specialized fluid connective tissue. So connective proper कौन ना लूज कनेक्टिव आ गोटे डेन्स कनेक्टिव टिश्यू. लूज कनेक्टिव कौन है ना फ्यूअर फाइबर, फाइबर आर लेस. इन केस ऑफ डेन्स कनेक्टिव फाइबर आर मोर. कार्टिलेज इट इज ए सेमी सॉलिड मैट्रिक्स, बोन सॉलिड मैट्रिक्स, आउ ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. वी नो दैट. सो इट इज कम्स अंडर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. ताले कनेक्टिव टिश्यू को तीन भाग रे विभक्त करागला: प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू आउ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. प्रॉपर कौन गुड़ा ना प्रॉपर रो पुणी दी भाग रे विभक्त करागला: लूज कनेक्टिव, डेन्स कनेक्टिव टिश्यू. लूज पुणी अगेन तीन भाग रे विभक्त करागला: एरियोलर, एडिपोज, रेटिकुलर. डेन्स कनेक्टिव को पुणी तीन भाग रे विभक्त करागला: रेगुलर, इरेगुलर, इलास्टिक. सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू आर कार्टिलेज एंड बोन. Cartilage is a semi-solid matrix, bone solid matrix, and blood is a fluid connective tissue. Hyaline cartilage, fibroelastic cartilage, elastic cartilage हम पढ़ी छे. नाक जो hyaline cartilage अच्छी, larynx, trachea, गोटे सब cartilage. So bone compact, spongy, solid material bone गुड़ाक. These are supporting connective tissue. ताले first पढ़िले definition of connective tissue, then function of connective tissue, then classification of connective tissue. Now describe loose connective tissue. It is distributed throughout the body, binding mainly. Its main function is binding and packaging material. So the protein fiber in loose connective tissue are loosely arranged, less number, and contains relatively fewer cell. And protein fiber than dense connective tissue has more ground substance. So the loose connective tissue are
predominantly fibroblast with collagenous and elastic fiber are disappear throughout the ground substance. So it binds with the skin, the underlying muscle, and highly vascular, providing nutrients to the skin. It surrounds the blood vessel and nerves, where it provides both protection and nourishment. There are three types of loose connective tissue: areolar, adipose, reticular. ताले कौन कहला लूज कनेक्टिव टिश्यू? बाइंडिंग और पैकेजिंग पाई सहायता करिଥାଏ और लेस नंबर ऑफ फाइबर थाए, मेनली लूजली कनेक्टेड. आउ कौन ना इटा हमें कोडी पाइबा ना अंडर द अंडरलाइनिंग द मसल, माने स्किन और मसल रो लेयर भितर, हाईली भास्कुलर, बहुत ब्लड भेसल अच्छी जो कनेक्टिव टिश्यू रे मसल और स्किन रो मझिरे जो कनेक्टिव टिश्यू रहिला, जे की हेल्प करछि कोन पई ना न्यूट्रिएंट खाद्य जोगै दिए, प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट टू द स्किन. सो दिस इज ऑल अबाउट योर लूज कनेक्टिव टिश्यू. तीन भाग रे विभक्त कराइछि: एरियोलर, एडिपोज, रेटिकुलर. नाउ कम्स टू द डेंस कनेक्टिव टिश्यू. Consist of dense packed fiber, tightly packed fiber, closed packed fiber. So relatively little space between the fiber. So it's prominently high protein fiber than ground substance, also called collagenous connective tissue. It is divided into two categories: dense regular, dense irregular. कोटा डेंस रेगुलर, कोटा डेंस इरेगुलर देखिबा. द कोलाजन फाइबर आर प्रेजेंट इन रोज बिटवीन मेनी पैरेलल बंडल ऑफ फाइबर. टेंडन which attach to the skeletal muscle, ligament which attach to the bone to another. So this is the two example of dense regular connective tissue, tendon and ligament. Then dense irregular connective tissue, that is has a fibroblast and many fiber, that is mostly collagen, that are oriented differently. This tissue is present in the skin. Dense irregular connective tissue कोडी थाए present in the skin. Dense regular connective tissue mainly tendon और ligament. तले डेंस कनेक्टिव टिश्यू दी भाग रे विभक्त कराला. गोटे हला रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, गोटे हला इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू. रेगुलर टा टेंडन आउ लिगामेंट, आउ इरेगुलर टा होची प्रेजेंट अंडर द इन द स्किन. तापर देखिबा स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू जो हमें कहले बोन बा कार्टिलेज बा ब्लड. So the intracellular material of cartilage is solid and malleable and resist compression. Cell of this tissue are enclosed in small cavities within the matrix secreted by them. Most of the cartilaginous invertebrate are replaced by the bone in adult. So cartilage is present in the tip of the nose, outer ear joint, trachea, larynx, between the adjacent bone of the vertebral column, limbs and hands in the adult. So first specialized connective tissue होची cartilage. Cartilage टा हमें कोडी देखिबा ear, trachea, larynx, nose. Then another type of specialized connective tissue, bone. Bone cells are embedded in hard matrix. It is composed of calcium and phosphorus. So bone have a hard and non-malleable ground substance rich in the calcium salt and collagen fiber, which gives the bone its strength and it provides the structural frame of our body. So two bones are connected to each other by another type of connective tissue that is called ligament. So this tissue is very elastic, it has a considerable strength
and ligament contain very little matrix. Tendon connect the bone to the muscle, and another type of connective tissue. So tendon are fibrous tissue with great strength but limited flexibility. Then now comes to the another specialized connective tissue, that is blood. Blood is a fluid connective tissue containing plasma, RBC, WBC, platelet, which helps to circulating the blood or help in the transport of various substance to the various parts of our body. हेले स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू कौन पढ़िले ना कार्टिलेज, बोन आउ ब्लड. बोन भितर देखले लिगामेंट, टेंडन एगुड़ाक देखिए. दीज आर ऑल स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू. क्विक रिकेप ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू. देखिबा कौन कनेक्टिव टिश्यू रे हमें पढ़िले. फर्स्ट कनेक्टिव टिश्यू मेजर सपोर्टिंग टिश्यू. मेन फंक्शन है प्रोटेक्ट अगेंस्ट द वुंड एंड इन्फेक्शन. फैट एंड इन्सुलेट बा बॉडी टेम्परेचर रेगुलेटर हिसाब रे एडिपोज टिश्यूटा काम करुच्ची. सपोर्टिंग टिश्यू आम बॉडी रो फ्रेमवर्क तैयारी करिवारे हेल्प करुच्ची. हेमोपोएटिक टिश्यू आम बॉडी रो ब्लड तैयारी करिवारे सहायता करुच्ची. लिम्फेटिक टिश्यू बॉडी रो डिफेंस मेकानिज्म हिसाब रे सहायता करुच्ची. ये जो एरियोलार, एडिपोज, सपोर्टिव, हेमोपोएटिक, लिम्फेटिक ऑल आर कनेक्टिव टिश्यू. तापरे देखले डिफरेंट कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट इन आवर बॉडी. तापरे क्लासिफिकेशन, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज, बोन, ब्लड. तार डिटेल सब डिस्कशन कले. नाउ कम्स टू द मसल टिश्यू. मसल टिश्यू कौन? कनेक्टिव टिश्यू पर आसला मसल टिश्यू. इट इज मेड अप ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड थीन, पतला एंड इलोंगेटेड सेल कॉल्ड मसल फाइबर. So the muscle fiber contains specialized cytoplasm called sacroplasm that are contain network of the membrane called sacroplasmic reticulum. The muscle fiber may be bounded by the cell called sacrolemma. So each muscle fiber may contain number of longitudinal fibrils called myofibrils. Already we have discussed detail in the skeletal muscle chapter. So it acquires its name because most of the muscle involved are attached to the skeleton and make it move. Also known as striated muscle because its cell or fiber are composed of alternating light and dark brown. Also known as voluntary muscle. स्केलेटल मसल टाकू वॉलंटरी मसल मध्य कहा जाए. ये जो मसल टिश्यू तीन भाग में विभक्त करागला, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल. स्केलेटल मसलटा आम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो रे डिस्कस कर सारी केमती तार स्ट्रक्चर अच्छी बा कंट्राक्शन रे हेल्प करची बा मूवमेंट रे हेल्प करची. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस डिटेल केमती composed of muscle fiber. Each muscle fiber is long cylindrical shape. Each fiber contain myofibrils, then which is made up of thick and thin thread like structure. Then thick myofilament को कुहाउची. It is also composed of large protein. Now thin myofilament is composed of actin, myosin. We have already discussed. And actin and myosin how helps to the muscle contraction. Mainly voluntary muscle or skeletal muscle voluntary function जो control रे they bring about the movement of the organ and locomotion of the body. Then देखिबा जे smooth muscle, skeletal muscle परे smooth muscle. It get its name because it is not striated. It appears smooth under microscope and called involuntary mammal. It is not controlled by our brain and spinal cord. It is controlled by our autonomic nervous system. So muscle fiber is long but not nearly as long as skeletal muscle. Spindle shape and slender. केमती हेतिबो स्मूथ मसल रो स्ट्रक्चर स्पिंडल शेप, स्लेंडर, लॉन्ग
So it contain only one nucleus situated at the center of the fiber. So smooth muscle fiber is enclosed by sacrolemma and contain numerous longitudinal myofibrils. It also contain actin and myosin filament within the myofibrils are very thin and are arranged more randomly than in the skeletal muscle. So there is no strips. Two main characteristics: its contraction and relaxation period are slower. Its action is rhythmical. Its contraction may last 30 seconds or more, but it does not tire easily. So such sustained contraction pulls the ability to stretch made it suitable to the muscle control of stomach, intestine, urinary bladder and uterus. ताले ये जो स्मूथ मसल आम मेनली कौटी देखा स्टमक, इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लाडर, यूटेरस तार जो कंट्राक्शन बा रिलैक्सेशन होउची तापाई ए स्मूथ मसल हेल्प करूची. इट इज कंट्रोल्ड बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम द्वारा कंट्रोल होउची. जे इनवॉल्यूंटरी मसल, स्केलेटल मसल इज ए वॉलंटरी कंट्रोल, वॉलंटरी मसल. तापरे देखिबा नेक्स्ट कार्डियक मसल. So it is present only in the heart. See the figure. Cardiac muscle cell are closely packed and each cell are nucleated and separated from each other. प्रत्येकटा सेल न्यूक्लियस अछि एवं separate to each other. The cells are joined end to end by specialized cell junction called intercalated disc. प्रत्येकटा सेल intercalated disc द्वारा attach होइछन्ति that attach one cell to another with desmosomes, connect the myofibril filament of adjacent cell and contain gap junction that helps to synchronize the contraction of cardiac muscle by allowing impulse transmission from one cell to another cell. So supplied with the central and autonomic nervous system. The rhythmic contraction of on its own. हम पढ़ीचु रिदमिक कंट्राक्शन केमती तार ओन एसए नोड रु स्टार्ट हेकी परकेंजी फाइबर पर्यंत जाउची. सो दे डू नॉट गेट फैटिक. सो कॉल्ड एज ए फैटिकलेस मसल. कार्डियक मसल इज आल्सो कॉल्ड फैटिकलेस मसल. नाउ कम्स टू द नर्वस सिस्टम, सॉरी नर्वस टिश्यू. नर्वस टिश्यू combination of neuron and neuroglia. Nervous tissue contain densely packed nervous cell, neuron and specialized for nerve impulse conduction. Nervous tissue consists of neuron or neuroglia. Neuron 100 billion of neuron are present in our nervous system. So they are specialized type of cell. They vary shape and size. All neuron contain three principal part. तीनिटा जिनस निहाती रहिबो गोटे नर्व सेल रे. कौन और न्यूरॉन रे? सेल बॉडी, डेंड्राइट एंड एक्सन. देखिबा सेल बॉडी कौन, डेंड्राइट कौन, एक्सन कौन. हैज ए लार्ज न्यूक्लियस. सेल बॉडी टा हैज ए लार्ज न्यूक्लियस व्हिच कंटेन प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलस एज वेल एज अदर सेवरल स्ट्रक्चर लाइक नीसेल बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूरोफिलामेंट which is responsible for the metabolism, growth and repair of neuron. ताले ए जो जिनस गुड़ा सेल बॉडी रे रहिला कोन कोन माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूरोफिलामेंट, लाइसोसोम which is responsible for metabolism, growth and repair of the neuron. निसेल बॉडी कोन करूची? मेड अप ऑफ RNA. Then free ribosome help in protein synthesis. न्यूरोफिलामेंट और न्यूरोट्यूबुल कौन करुच्ची? थ्रेड लाइक प्रोटीन नर्व पैरेलल टू द लॉन्ग प्रोसेस. न्यूरोफिलामेंट सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर व्हिच प्रोवाइड स्केलेटल फ्रेमवर्क टू एक्शन. न्यूरोट्यूबुल ट्रांसपोर्ट इंट्रासेलुलर प्रोटीन बिटवीन द सेल बॉडी एंड प्रोसेस. सो ये जो सेल बॉडी इट इज ए बिग न्यूक्लियस, बड़ गोटे न्यूक्लियस ता भितर ये सब जिनस लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूरोफिलामेंट सब रोचे जोटा कि मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिपेयर न्यूरोन रो साहाय्य करूचे.
तापर आसबे डेंड्राइट मेनी थ्रेड साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन अराइज फ्रॉम द सेल बॉडी आर कॉल्ड डेंड्राइट साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन इट कंडक्ट नर्व इंपल्स टुवर्ड्स द सेल बॉडी एक्शन रू डेंड्राइट को आसुची सो दे आर माइलिनेटेड एंड हैव निसेल ग्रानुल एंड न्यूरोफाइब्रिल तापर देखिए एक्शन यूजुअली वन ऑफ द साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन इज लॉन्ग एंड अनब्रांच्ड कॉल्ड एक्शन एटा अनब्रांच्ड और लॉन्ग इट इज कवर्ड बाय लिपिड शीट कॉल्ड माइलिन शीट myelin sheath is formed by specialized non-neuronal cell called Schwann cell. That means आउ गोटे प्रकार सेल अच्छी जी कि Schwann cell. It is controlled by peripheral nervous system and by oligodendrocyte in central nervous system. Schwann cell आमे कहूचे peripheral nervous system रे, central nervous system रे oligodendrocytes. The outer sheath of these cells is known as neurolemma. The बाहर पाखटा को neurolemma. It control nerve impulse away from the body. तापर देखिए न्यूरोग्लिया जो नर्व सेल और न्यूरोग्लिया जेटा कॉम्बिनेशन रे नर्वस टिश्यू तले न्यूरोग्लिया कौन करे ग्लियल सेल फॉर नॉन कंडक्टिंग सेल these are non conducting cell that protect and nurture as well as support the cells of nervous tissue. ताले 4 types of neuroglia astrocyte oligodendrocyte microglial और ependymal cell largest most numerous glial cell with long star like process help from blood brain barrier structure support transport substance between the blood vessel and neuron help करे excess ion and neurotransmitter mop up the excess ion mainly potassium ion and neurotransmitter it is act as a neurotransmitter which helps the impulse transmission from presynaptic to postsynaptic then oligodendrocyte relatively small with several branching process found in the gray and white matter of central nervous system function produce myelin sheath microglial cell smallest glial cell cuboidal columnar shape what is the function macrophage and engulf damaged neuron engulf the damaged neuron then ependymal cell elongated cell arranged in a single layer inner lining wall of the spinal cord and ventricle of the brain तल कौन कहला again quick recap of the nervous tissue न्यूरॉन और न्यूरोग्लिया को लेकी तैयारी न्यूरॉन 100 बिलियन न्यूरॉन प्रेजेंट आम बॉडी रे रही बा नर्वस सिस्टम रे अच्छी केमती न्यूरॉन टा काकू काकू लेकी गठित तो सेल बॉडी डेंड्राइट आउ एक्शन मेनली आ सेल बॉडी कौन सेल बॉडी टा होची लार्ज न्यूक्लियस जहाँ भितरे लाइसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियोफिलामेंट बा नेसेल बॉडी अच्छी जे कि आमर ग्रोथ रिपेयर आउ मेटाबॉलिज्म न्यूरॉन रो ग्रोथ रिपेयर और मेटाबॉलिज्म रे हेल्प करछि सेल बॉडी डेंड्राइट कौन ना इट कंडक्ट द नर्व इंपल्स टुवर्ड्स द सेल बॉडी तापर देखिबा डेंड्राइट पर एक्शन एक्शन कौन ना यूजुअली साइटोप्लाज्मिक जो सेल रे जेमति साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस सेल मेम्ब्रेन रही से भाया आमर ये नर्व सेल रो एक्शन टा कहउछि साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन टा लंबाड़िया हेतिबो जनरली सेल रो साइटोप्लाज्म टा गोल भितरे ऑर्गेनेल्स गुडा को रहउछि किंतु एठी न्यूरॉन रे लॉन्ग और अनब्रांच्ड ब्रांच हे नथि जोठी कि माइलिन शीथ स्वांग सेल न्यूरोलेमा एडा सब रही और नर्व सेल को सपोर्ट करुछि न्यूरोग्लिया जे कि 4 टाइप्स एस्ट्रोसाइड ओलिगोडेंड्रोसाइड माइक्रोग्लियल और एपेंडेमल सेल so this is the neuroglial cell this is all about your connective tissue muscular tissue and nervous tissue thank you for watching this video stay home stay safe thank you